A very warm welcome to you, Mr. Chief Minister. Thank you for being a part of this global summit that TV9 Bharatvarsh and TV9 Network is hosting, where we are talking about how far or how near are we to becoming the Vishwaguru. And if India is to become the Vishwaguru, the states play an important role, especially a state like Karnataka. Karnataka, as a state, has long been known for its higher educational institutions, its high-tech industry, and now the software industry also. You've been meeting a lot of industry leaders. How do you think Karnataka can add to the growth story of Karnataka and the growth story of India? Thank you very much. The very fact that this conclave has recognized Karnataka will be a part of a growth engine for the country itself speaks volume. We have got a very long history of development with technology. We have highest number of public sectors in niche areas, in aerospace, in defense, and in manufacturing sector. Prior to this, the benevolent Maharaja of Mysore will not believe that we had industries right from steel and cement to the ink. Therefore, we have been an industrialized state for a long time, and the new technologies which were put to use all over the world were tested in Bangalore, in India. Therefore, the highest number of R&D centers in the niche area, including genomics, biotechnology, artificial intelligence, so on and so forth, are in a large number in the Bangalore. In fact, Bangalore is one unique city which can boast of 400 very, very high-tech R&D international centers in both public and private sectors. 400, no other city in the world, forget India, no other city in the world has. So there are a lot of interactions are happening without much noise. New products have been developed, new applications have been developed, and this is a buzzword all over the world. The next thing is, just to say, out of 500 Fortune companies, 400 are in Bangalore and Karnataka. That itself will speak. And our endeavor to see that the acceleration is never let loose. We have been accelerating the growth time and again with all the challenges. And we have been in the forefront, right from agriculture to manufacturing to then we got IT in 1980s and IT, BT, then of course we have got DRDO, defense, then aerospace, and as well as now the startups. So we have been pioneer in the changeovers, which is seen all over the world. We are part of that changeover before anybody. That's how the technology-driven development, which is a sustainable development, is from Karnataka. And this is a biggest contribution Karnataka can really give to the drive of growth of India. हिंदी में भी मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ ना, हिंदी में भी पूछ सकती हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल हम दिल्ली में क्योंकि बैठे हैं तो थोड़ा हिंदी में भी बात करेंगे। डबल इंजन की सरकार, ये बीजेपी का नारा बहुत सारे स्टेट्स में है और कर्नाटक एक स्टेट है जहां पर डबल इंजन की सरकार है, तो उससे कितना फायदा मिलता है कर्नाटक को एक राज्य के तौर पे? जरूर तो मिलेगा। अगर दिल्ली का दरवाज़ा खुला रहेगा तो बहुत सारी चीज़ आसान हो जाएगा। जो पॉलिसी मेकिंग है वो तो दिल्ली में है और जो इंटरनेशनल
जो गेटवे है वो दिल्ली में है। तो अगर इंटरनेशनल गेटवे हमको हाईवे बना सकता है तो वो डबल इंजन सरकार ही बना सकता है, नहीं तो नहीं। बाधा डालना बहुत आसान है, बाधा डालना बहुत आसान है, लेकिन हाथ पकड़ के आगे लेके जाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी करेगा उसका बहुत मीठा फल मिलेगा। तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जब से मोदी जी आए हैं और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात की, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्किल टेक पीपल are in Karnataka. I'm not talking only high tech, even right from our ITIs, our diplomas, in different fields, even in agriculture. Our skill is one of our important ingredients of our growth. And whenever, our Prime Minister is a visionary. All these days the nation was cribbing about population. The growth in population is impediment of the growth. He converted that disadvantage into advantage. He started talking of demographic dividends. Therefore, that demographic dividends comes from Karnataka in a big way, and it inspires other states also. That is one thing. Then second is a big presence of PSUs, as I said, and defense. Jo Atmanirbhar in defense started, the major contribution is from Karnataka. Because of the presence of defense, all three sectors in a very big way, that too in a R&D, DRDO. And in power sector, we have got a very big R&D centers there. Therefore, and you just take an example of semiconductor. जो सेमीकंडक्टर जब चाइना की इशू आ गया और सेमीकंडक्टर मिलना मुश्किल हो गया है, तभी सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी बनाया है, हमारा स्टेट फर्स्ट है to sign a MOU with the top-notch companies in semiconductor, and we are going to manufacture semiconductors very soon in Karnataka. So that is the strength. इसलिए ये जो पॉलिसी अगर दिल्ली में नहीं बनती है तो हमको मुश्किल हो जाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, डबल इंजन सरकार 100% फायदा करेगा। और एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर है, बहुत बहुत बड़े पैमाने पे हम अभी कोशिश कर रहे हैं। और एफपीओ जो डबल इंजन सरकार जो बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने, हाईएस्ट नंबर ऑफ एफपीओ कर्नाटक में, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है, हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स है। जो भी पॉलिसी जो यहाँ बनती है तो उसका सीधा सीधा कनेक्ट कर्नाटक से है। और ये अभी हमारा प्रधानमंत्री जी सबको अभी इसका अच्छा सा पहचान है, इसलिए दे लुक अपॉन कर्नाटका एंड वी विल स्टैंड अप फॉर इट। आपने कहा कि हाईएस्ट नंबर यूनिकॉर्न्स के हैं, आप ऐसी मुझे जानकारी है आज शाम में भी कुछ अहम यूनिकॉर्न से और कुछ स्टार्टअप से मिलने वाले हैं, उनके लीडरशिप से मिलने वाले हैं। क्या आपका संदेश है उनके लिए कि वो क्यों यहाँ आए और क्यों एक अट्रैक्टिव जगह है बैंगलोर ये यूनिकॉर्न्स के लिए, ये स्टार्टअप्स के लिए? क्या वहाँ उन्हें खास मिलता है? जैसे आपने बताया, ये स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनती है, यूनिकॉर्न डेकाकॉर्न बनती है, इसके लिए अच्छा सा माहौल रहना चाहिए। हमारे जो मोदी जी का एक नया तरीके से ग्रोथ करने का ऑफ लिटिल गवर्नमेंट गवर्नेंस, वो जो है वो वहाँ एक माहौल बन गया, इकोसिस्टम है। और जैसे मैं बताया, कौन सा भी चीज़ के लिए जो नया हो रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है और जो एक्सपेरिमेंट को एक्सपीरियंस करना है, वहाँ सब मिलते हैं। और स्किल्ड मैन पावर जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्टार्टअप्स के लिए, वो है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ एजुकेशंस, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, यू नेम इट, वी हैव गॉट दैट। देयरफॉर वो जो इकोसिस्टम जो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के और R&D का है, वो हम स्टेट उसको ऐसे माहौल बनाया है कि ही विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड फ्री, not only to do the, we tell him you fail, no problem, but you have to do it. Just go do it, don't worry about success and failure.
And we have got a lot of programs, Elevate programs, programs for women, programs for rural young boys to do the startup. We got startups in agriculture, in fisheries. You'll not believe. We got startups in textiles. So not only in high niche areas, even to day economic development, the startups are now coming up with that solutions to the problems. आपने कहा एक इकोसिस्टम होना चाहिए और वो इकोसिस्टम उन्हें वहाँ मिलता है, लेकिन हाल ही में जिस तरह की खबरें आती रहती हैं बैंगलोर से, कर्नाटक से, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा जो वहाँ पर खबरें निकल कर आती हैं, तो वो क्या हर्ट करता है इस इकोसिस्टम को, इस एनवायरनमेंट को जो आप क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ पर ग्रोथ स्टोरी हो, तो ग्रोथ स्टोरी को इफेक्ट करता है क्या ये फ्रिंज एलिमेंट आते हैं? तो आपका ये फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे मालूम है। सब मीडिया जो सफेद कपड़े में एक दाग ढूंढने का आपका कोशिश है, लेकिन ये दाग नहीं है, ये आपका सिर्फ इमेजिनेशन है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मान लिया ये जो 2-3 इश्यूज थे, हमने उसको पूरी तरह से लीगली हैंडल किया है और सबको हमने कॉन्फिडेंस में लेके हैंडल किया, इसलिए अभी पूरा वो कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि we are trying to project one side affair. No, we want the entire state should be peaceful. Once it is peaceful, then the growth story can be done. फ्रिंज एलिमेंट्स रहता है तो उनका एक काम है, तो उनको काम को बंद करना हमारा काम है, हम कर दिया है। नेक्स्ट इज दैट मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो नहीं है अभी, जो पास्ट हो गया, उसको अब प्रेजेंट में लाने का कोई भी कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं जब डावोस में गया था, तो डावोस में वहाँ की जो पर्पस था उसके बारे में कुछ भी पूछे, लेकिन वहाँ के इधर ऐसी चीज पूछे तो वी कांट प्रोजेक्ट द कंट्री और अ स्टेट और अ सिटी इन अ राइट पर्सपेक्टिव। कहाँ नहीं है बोलिए? पूरी विश्व पर है ये फ्रिंज एलिमेंट्स, लेकिन फिर भी ग्रोथ हो रहा है। यूरोप में भी हो रहा है, यूरोप में भी फ्रिंज एलिमेंट्स है, ग्रोथ हो रहा है। अमेरिका में भी फ्रिंज एलिमेंट्स है, कितना वायलेंस है, वो ग्रोथ हो रहा है। सो ग्रोथ स्टोरी विल नेवर स्टॉप, बिकॉज one simple reason, the natural urge in every human being to grow, and that is the motivation to grow. Therefore, in spite of all adversaries, growth story will continue, and I am confident that the situation is in control and future also will keep it in control. So what you're saying is कि हम फ्रिंज एलिमेंट्स को, आप एक सरकार के तौर पर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर, फ्रिंज एलिमेंट्स को कभी बढ़ने नहीं देंगे कर्नाटक में, और वो ग्रोथ स्टोरी को किसी भी सूरत में इफेक्ट नहीं करेंगे। ये जो अभी हुआ है वही एक विटनेस है, साक्षी है। हम कंट्रोल किया है, आगे भी कंट्रोल करेंगे। आपने 2-3 इश्यूज की बात की और आपने कहा कि वो फेवरेट टॉपिक है, तो एक उसमें से सिलेबस रिविजन का इशू है। सिलेबस जो रिवाइज किया गया उसका इशू है, उसको क्या मेरिट्स होंगे तो कंसिडर किया जाएगा, उसमें कुछ बदलाव होगा? क्या पॉजिटिव हैं आप उसको लेकर? ये भी आपका इतना बड़ा कॉन्क्लेव में ये सब्जेक्ट आपको मुनासिब है? ठीक है, फिर भी मैं आंसर करूंगा आपका। ये जो चेंजेस है 3-4 इयर्स में कभी कभी होती है। जब भी चेंज होती है तो जो पिछले जिसको पसंद था, अगर कुछ नया चेंज हुआ तो उसका आपत्ति हो जाएगी। लेकिन हमारी जो सरकार है, वी गॉट ओपन माइंड, हमने पूरा वेब पे लगा दिया है। जो पिछले था थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो किसी को किसी आपत्ति है तो वो प्रोटेस्ट ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं, और अगर उसका मुनासिब है एंड दे आर वेरी रीजनेबल, वी आर ओपन टू करेक्ट इट। वी आर नॉट हियर फॉर एनी स्टेटस क्वेस्ट, एंड देयरफॉर history has got its own important place in the growth of the country, and it should be done in a right perspective. And the present day, right from students to youngsters, they have got access of so much of information system through internet. I think they are better placed and they are much more wiser than the few people concerned about the past. Let us live in the present.
दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, बैंगलोर में प्लेजेंट वेदर है कंपेयर्ड टू दिल्ली की तुलना में, लेकिन क्लाइमेट भी एक वजह है। यही मैं यही मैं आ रही थी कि क्लाइमेट भी एक वजह है कि लोग वहाँ शायद बेहतर समझते हैं कि वहाँ पर हम अपनी कंपनीज या स्टार्टअप्स लेकर जाएं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, कुछ ट्रैफिक की समस्याएं हैं, क्या उनको कैसे एड्रेस कर रहे हैं आप? देखो, मेरा तजुर्बा ये है, अगर कुछ अच्छे काम कर रहे, बड़े काम कर रहे, अगर कोई अपोजिशन नहीं किए तो बहुत बड़ा नहीं है। Without opposition or impediments here and there, great things doesn't happen. Then it's a normal thing. See, you can't expect growth. Where there will be all these issues of infrastructure, where there is growth. जहाँ growth नहीं है तो आराम से रहते लोग। तो यहाँ इतना growth हो रहा है, and especially Bangalore is growing leaps and bounds. पूरा इंडिया का हर एक स्टेट, देश, पूरा विश्व का हर एक देश का सिटीजन बेंगलुरु आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है। एवरी डे मोर देन 5,000 न्यू व्हीकल्स हिट द रोड्स। तो ये तो एक सवाल है कि ये जो एक चैलेंज है हम मीट कर रहे हैं, उसको डीकंजेशन के लिए प्लान किया है, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए प्लान किया है। अभी रोड सब ठीक हो गया है, लेकिन जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके बारे में हम सीरियसली सोच रहे हैं, और बहुत सारे अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। seamless signals कर रहे हैं, and we have got body worn policemen, lot of new technologies, swirl cameras, and then artificial intelligence cameras हमने लोड किया है रोड पे। So lot of things through automation also we are going to improve the traffic. आपने दावोस का जिक्र किया। दावोस जब आप गए, वहां से भी कर्नाटक को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला, एक बड़ा ग्रोथ स्टोरी का वो बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कैसे आपको लगता है कि उसके साथ चैलेंजेस भी आएंगे, और वो चैलेंजेस को मीट करने के लिए कितना तैयार हैं, और क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो उसके लिए चैलेंजेस क्या हैं? देखो, ये जो नया जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वंस अगेन इट्स इन दी न्यू, टोटली न्यू फील्ड, राइट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी इनटू हाइड्रोजन इनटू अमोनिया, which is new thing for the country, and our Prime Minister has taken a lead by bringing in policies. The challenge is the new technology has to be adopted and done successfully. So once again, we have to create an ecosystem for these new technologies. And we are already into that. I have signed a very, very important company in Davos. As soon as I came, another important company in the same field I have signed with the equal amount of this thing. And much more are coming. Therefore, these are all in new technology areas. And they are all experienced in the new technology areas. Therefore, they renew, for example, the green energy, that is ethanol, highest number of ethanol manufacturing units in the country are presently in Karnataka. So we are always way ahead. Now we are looking into hydrogen. Then next is manufacturing of ammonia through seawater. So that has been explored in a very big way now. And we'll have one of the biggest ammonia manufacturing units in the world. There will be another one in the Gulf, but we'll also be equally big in the world. So we are aware what's the next, and we are prepared for the next. That's how meeting the challenges is the way forward for us. Sir, आपसे राजनीति का सवाल ना हो ये तो सही नहीं है, इसलिए ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ राजनीति भी उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूटर होती है। तो अभी बीबीएमपी के इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या लगता है आपको वो प्रिकर्सर है 2023 के असेंबली इलेक्शंस के फिनाले से पहले ये चुनाव? देखो, हर एक इलेक्शन का एक एक महीना रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है। हर एक इलेक्शन में इश्यूज अलग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असेंबली इज अ स्टेट इशू. But however, every election is important in its own terms. Bangalore is an international city. It is not only confined to the state and country. Therefore, winning Bangalore is very, very important for us. And we are going to win it. But
more than winning it, we have to see that the civic responsibilities which will be on us, it's already on us, to see that the civic challenges are met and amenities are given to the people in a big way, because it's growing in such a big way. We need a lot of planning, plans, sub-plans, and decentralization of authorities. New services has to be given. So all these issues we are doing it very scientifically, and we are confident of not only winning Bangalore, and will be making it a true international city of India. 2023 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले ही अमित शाह जी ने कहा था कि आने वाले चुनाव वो आपकी लीडरशिप में ही कर्नाटक में लड़ेंगे. क्या आपका टारगेट है 2023 के लिए, और अभी से क्या आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए कर रहे हैं कर्नाटक में? क्या आपका सीट टारगेट है 2023 का? देखो, हमारा तो लक्ष्य बहुत साफ है. मिशन 150 अमित जी ने हमको दिया है, और उस पर हम काम चालू किया है. 6 महीने से पहले ही काम चालू किया है. और उसमें इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो बजट हमने जो मार्च में जो दिया है स्टेट को, उसको इम्प्लीमेंट करना. और इतना वेलकम हो गया बजट का, तो उसका अगर असर होना है तो लास्ट माइल डिलीवरी भी इम्पोर्टेंट है. तो वो कोशिश में हम हैं. मेरा ख्याल से 3-4 महीने में उसका नतीजा आने लगेगा. और जो हमने स्लोगन दिया है कि नवा भारत के लिए नवा कर्नाटक, वो यंगस्टर्स, वुमेन, and even we are giving opportunity for the woman who is working in the fields, SC/ST women working in the fields. We have made programs for them to come up. If you have got 1 minute, I'll just explain. We are number 3 in per capita income. But we know that 30% of the population only contributes. Still 70% work for their livelihoods. So we want to uplift these people who are working for their livelihoods to come into the economic activity. They have to contribute for the economic activity. Then their per capita income will increase, GDP will increase, and state will be benefited. For me, economy is not money. For me, economy is the human power, human working power. And according to me, the movers and shakers of this economy of this country are bottom of the pyramid, not top of the pyramid. As a chief minister, I can sanction 100 crores for a road. That doesn't move economy. Unless that man, a laborer in the scorching sun, puts asphalt on the road and make traffic to move. So who is the real mover and shaker? He is the man who has toiled hard in the sun and made that road. Therefore, I believe in human workforce, not the money. Money will come. Money is necessary. But unless until we give credit to the person who is really toiling hard and take care of him, then only the economy grows. For me, economy is not money, economy is human power. ये अहम बात है. इकोनॉमी इज मैन पावर, नॉट जस्ट मनी. आपने 3 मुख्यमंत्रियों के साथ तो सीधे तौर पर उनके मंत्रालय में काम किया. उसके पहले भी 5 मुख्यमंत्रियों के साथ आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने काम किया. उसका कितना एडवांटेज मिलता है जब आप अब खुद उस हॉट सीट पर बैठकर काम करते हैं? तो बहुत ही एडवांटेज है. हमने बहुत ही सीजन्ड एक्सपीरियंस स्टेट्समैन के साथ काम किया है, और वो टाइम पे जो चैलेंजेस था उन्होंने कैसे निभाया है बहुत नज़दीक से देखा है. और अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सब हमको हेल्प हो रहा है. उनका इंस्पिरेशन मिल रहा है, मोटिवेशन भी मिल रहा है. और जो आइडियल्स थे उनका और कैसे उन्होंने निभाया है वो भी हमको आगे हमको गाइड कर रहा है. I have worked with statesmen like Ramakrishna Hegde, J.H. Patel, Devagowda, Yedurappa, then Sadanand Gowda. Then I was very close to even the opposition
chief ministers. Therefore, I've been more a student of political science rather than people representative and so on and so forth. So that has helped me. Political you science spoke about B.S. Yediyurappa also. B.S. Yediyurappa की एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत टावरिंग पर्सनालिटी है बीजेपी के लिए भी और खास तौर पर कर्नाटक स्टेट के लिए भी. तो क्या बहुत मुश्किल था? Was it difficult to fill the shoes that No, for me it was very easy. Everybody thinks like that. But some facts are not like everybody thinks. For me it was very easy because I have worked under him, very closely with him, and I have worked with him in all kind of crisis. And he has blessed me, I stood by him. Therefore, there was such a cordial relation. So whatever the changeover and whatever the adaptation, it was just like any other normal day for me. इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते आपसे मैं जरूर ये सुनना चाहूंगी. आपको मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत पसंद हैं. नहीं, गाना नहीं सुनना है, लेकिन एक गाना जो आप कभी कभी जब आप बहुत स्ट्रेस होता है तो गुनगुनाते हैं या सोचते हैं उस गाने के बारे में, कोई है गाना? नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं. मैं तो मोहम्मद रफ़ी का फैन हूँ और मुकेश जी का, मन्नाडी जी का, किशोर कुमार का, सबका फैन हूँ मैं. जो पुरानी हिंदी गाना है वो स्ट्रेस बस्टर भी है आजकल. आपको सब महसूस हुआ रहेगा जब भी एट द एंड ऑफ द डे इफ यू लिसन टू 2-3 गुड सॉन्ग्स दैट मेक्स द डे कंप्लीट. That's my experience. Which is your favorite song to listen to? There are a lot of. Not saying, just hum a few lines. No. I please don't ask me. गाना बता दीजिए, हम बता देंगे, सुना देंगे लोगों को. नहीं, ऐसे बहुत है. If I say one song, I'll not be doing justice to others. Okay, thank you. Thank you so much. बसवराज बोम्मई जो ये कहते हैं, जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने कहा कि मैं कॉमन मैन का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं, और वही उन्होंने बनकर दिखाया भी है. बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष और TV9 नेटवर्क के इस कॉन्क्लेव में आने के लिए सर.